Good morning, everyone. This is the next video of our chapter number 5, that is natural vegetation. In last video, we have discussed about the evergreen forest and semi-evergreen forest, and today we are going to discuss about the tropical deciduous forest. Okay, so we further divide this tropical deciduous forest into moist forest and dry deciduous forest. Okay, moist deciduous forest and dry deciduous forest. Okay, so our first topic in the deciduous forest is moist deciduous forest. Climatic condition in this moist deciduous forest region is it receive rainfall 100 to 150 centimeter. Okay, so in this region we receive average annual rainfall 100 to 150 centimeter, and the temperature in this region average temperature 24 degree Celsius to 27 degree Celsius. Okay, this is the average temperature of the moist deciduous forest region. Okay, and the humidity is less as compared to the evergreen forest. So in this region 60 to 80% humidity found. Okay, so these are the climatic condition of moist deciduous forest. Rainfall received 100 to 150 centimeter, and the temperature in this region 24 degree Celsius to 27 degree Celsius, and humidity of this region 60 to 80%, as it lies in the इंटीरियर ऑफ इंडिया. ह्यूमिडिटी क्यों कम है? क्योंकि ये इंडिया के इंटीरियर में है. ओके, कोस्टल रीजन होता तो ह्यूमिडिटी आपको ज़्यादा मिलेगी, बट इट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द इंडिया. सो वी हैव 3 important रीजन फॉर this moist deciduous forest. So this found, first region is northeastern states along with foothills of Himalaya. And second important region, eastern slope of Western Ghat. Okay, and third one is the Odisha. So these are the 3 important regions where we found the moist deciduous forest. First one is the foothills of Himalaya, second one is the Odisha, and third one is the eastern slope of Western Ghat. Okay, here we receive average annual rainfall 100 to 150 centimeter. Okay, ईस्टर्न स्लोप क्यों है? वेस्टर्न स्लोप, दिस इज़ द वेस्टर्न घाट. मैंने वेस्टर्न स्लोप पे आपको बताया था, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स एवरेज रेनफॉल 200 to 300 centimeter. So here we found evergreen forest, but it is the eastern slope is in the leeward side of the southwest monsoon, so we receive less rainfall as compared to the western slope. So okay, तो आपको ईस्टर्न स्लोप पे कौन मिलेगा? मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे. ओके,
इट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया फुट हिल्स ऑफ हिमालय। देन ये आपका पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हो गया। यहाँ पे बीच में कहीं आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है। बट बाकी जो रीजन है ये आपको क्या मिलेगा, ड्राई मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये डेसिडियस फॉरेस्ट का रीजन है, ओके। दिस रीजन इज बिलोंग टू ड्राई ड्राई नहीं, आप लिखेंगे यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन। नेक्स्ट वन जो आपका है इज़ द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देखिए ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होगा, रेनफॉल रिसीव्ड जो होगा वो कम हो जाएगी थोड़ा। नेक्स्ट इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। सो इन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रेनफॉल इज 70 to 100 centimeter, okay, slightly less than the moist deciduous forest. Temperature you can write 25 degrees Celsius average temperature, and this is average annual rainfall. And humidity in this region 60% only, okay. So these are the climatic condition for the dry deciduous forest, okay. And this is the buffer zone. Dry deciduous forest is the buffer zone between the thorn forest and moist deciduous forest. तो जो moist deciduous forest होगा उसका जो buffer zone होगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, dry deciduous forest मिलेगा। लाइक यहाँ पे ये देखिए ये थॉर्न फॉरेस्ट है, यहाँ पे ड्राई डेसिडियस होगा और इधर आपको मिलेगा moist deciduous forest, ओके। सो दिस इज द बफर जोन। बफर जोन बिटवीन moist deciduous forest and thorn forest, okay. So moist deciduous forest receives 100 to 150 centimeter rainfall, but dry deciduous forest receive 70 to 100 centimeter rainfall. So rainfall in the dry region comparatively less than moist region. And temperature in this 25 degrees Celsius, and humidity also slightly lower than the moist deciduous forest, okay. Important reasons for the dry deciduous forest. So in Bihar, Uttar Pradesh and peninsular India, these are the three important regions for the dry deciduous forest. We found dry deciduous forest in these three important regions, okay. So these are important. Important vegetations for the deciduous forest. Important vegetation, ये मैंने आपको बताया था कि आपको फॉरेस्ट के लिए जब आप एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, लाइक रेनफॉल आपको ध्यान में रखना है, टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रीजन्स आपको ध्यान में रखना है, देन इंपॉर्टेंट वेजिटेशन आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी किसी भी फॉरेस्ट पर्टिकुलर फॉरेस्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी भी आप बता सकते हैं, और इम्पोर्टेंट वेजिटेशन एंड इम्पोर्टेंट रीजन्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट वेजिटेशन क्या होगा, यहाँ पे खैर होगा, एक खैर, एक्सेल वुड होगा, देन बेर, पलाश। So these are the important vegetation found in the dry deciduous forest or forest region. Two other important vegetation also there, tendu and amaltas, okay. तो ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं।
Tropical deciduous forest further divided into two parts: moist deciduous forest and dry deciduous forest. Moist deciduous forest receive rainfall higher than dry deciduous forest. It receive 100 to 150 centimeter rainfall, and it receive dry deciduous forest receive 70 to 100 centimeter rainfall. 24 to 27 degree Celsius average temperature in the moist deciduous forest, and average temperature in dry deciduous 25. 60 to 80% humidity found in the moist deciduous forest region, but in dry deciduous forest region we have only 60% humidity. This is the buffer zone. Dry deciduous forest is the buffer zone between the moist and the thorn forest. Okay, so this is the buffer zone between moist and thorn forest. And moist deciduous forest जो होगा वो आपका marginal region होगा. ओके, दिस इज द मार्जिनल रीजन. जैसे हम एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़ा सा इंटीरियर में एंटर करते हैं, देन वी फाउंड द मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके, सो इम्पोर्टेंट वेजिटेशन फाउंड बोथ डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑलमोस्ट जो इंडिया का मैक्सिमम पार्ट जो है उसको कवर करता है. तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट पाया जाता है दैट इज़ डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके, and important vegetation for this deciduous forest, this is khair, axlewood, bear, palas, tendu and amalthas. Okay, so these are the important vegetation found in the deciduous forest. Okay, in next video we will discuss two important forests. First one is the montane forest and swamps. Okay, so in next video we will discuss about montane forest and swamps. Thank you. Have a nice day.